What is electrochemistry? Electrochemistry is actually, it is the study of interchange. किसके दरमियान interchange? It is the study of interchange between electrical and chemical energy. We have already learned about the energy. Energy is the ability of doing work. So sometime uh, it is stored in the form of chemical, that is called the chemical energy. When this chemical energy is utilized to produce heat, then it is called thermal energy. And when it is utilized to create certain electrical work, then it is called electrical energy. So it is the interchange of chemical and electrical energy. But what it deals, actually electrochemistry deals with the investigation by the usage of electrolytic or galvanic cell that we will study in further lectures, where electrical energy either produces or utilized by incorporating redox reaction. So actually, if we consider, then the main thing here is the redox reaction. So redox reaction is the main thing, because without redox reaction, you can't understand the electrochemistry. Redox, the word red is coming from reduction, and ox is from oxidation. You can define reduction and oxidation in different ways. So see, we are discussing here in the form of table. So reduction and oxidation. What is reduction? Reduction is addition of electrons, while oxidation is removal of electron. You can take an example of reduction. For example, zinc 2 plus ion accept electron, and after receiving electron, it becomes neutral zinc atom. It has no charge because by gaining 2 electrons, the charges are cancelled out. And removal of electron, for example, you can consider this example. Cu in atomic form has no charge. When during a reaction, it loses its electrons. So after removing electrons, it becomes ion. And when electrons are showing, these are shown on right hand side of the arrow, it means electrons are being lost. So it was the first definition. And here there is another definition of redox reaction. The addition of hydrogen. Addition of hydrogen. And oxidation is the removal of hydrogen. We can take its example as well. If you consider a reaction between hydrogen sulfide and chlorine. So in this reaction, hydrogen sulfide and chlorine. So what happens here? It produces 2 moles of hydrogen chloride, and sulfur becomes separated. So here hydrogen is removed from sulfur. So sulfur is being oxidized. This is oxidation because of the removal of hydrogen. And
as hydrogen is added to the chlorine, so chlorine is being reduced. So this is the reduction. So chlorine is being reduced while hydrogen sulfide, sulfur in hydrogen sulfide is oxidized to sulfur. So this is the second definition. Now come to the next definition. Okay. Next definition based on oxygen atom. So addition of oxygen is called oxidation, while removal of oxygen is called reduction. So we can take an example of first we should write the removal of oxygen, and while oxidation is the addition of oxygen. Addition of oxygen. So we can take this example. For example, zinc oxide can be reduced by carbon to produce zinc metal and carbon dioxide. So this is one of the way to get pure zinc. Extraction of metal, it is one of the method, and carbon dioxide is produced. So if you see, if careful in this equation, oxygen is added to carbon atom. So carbon is being oxidized. This is the oxidation reaction. While as oxygen is removed from zinc, so this is the reduction reaction. So these are the three definitions, but we can define oxidation reduction in one more way. Let me show it. Now, if you consider that this is a scale, here 0, +1, +2, +3, +4, and on the left hand side, -1, -2, -3, -4. When you move from left to right, then this process is called oxidation. And if you move from right to left, then this process is called reduction. What does it mean? It means, for example, if an element is converted from its 2+ stage to 3+ stage, for example, iron. So actually this is the oxidation of Fe2 ion, ferrous ions, yani iron 2 ions into iron 3 ions. Because we are moving from here to here, so it is oxidation. But on the other hand, when you take an example, for example, MnO4 minus, this is magnet 7 ion, that is also called permanganate ion. If you find the oxidation number of this manganese, you will find it is +4. We will discuss how to find the oxidation number in next slide. So it is converted into Mn2 plus. So what is this? This is reduction. So this is the reduction process. Okay. So the fourth definition is
So the fourth definition is reduction is decrease in oxidation number, while oxidation is increase in oxidation number. तो यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब है लेस पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी मोर नेगेटिव, एक ही बात है, आप किसी भी तरह से ले लें। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन का मतलब है लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट सॉरी, तो ये ऑक्सीडेशन है, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ये रिडक्शन है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सवाल देते हैं, और ऐसा सवाल एग्जाम में भी आता है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ chromium, Cr is chromium, in Cr2O7 2 minus, या मैग्नीज इन KMnO4। तो देखिए बुक में मुख्तलिफ रूल्स दिए हुए हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, यहाँ पर मेनली ऑक्सीजन है और ग्रुप 1 में से पोटाशियम है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स के ऊपर +1 चार्ज होता है, ग्रुप 2 पर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेते हैं, ग्रुप 3 वालों की +3 लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम अगर इस ए पार्ट को सॉल्व करते हैं तो देखें ओवरऑल चार्ज है इसके ऊपर, अगर ये आइन है तो इसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज होगा, इसका ओवरऑल चार्ज है -2, तो -2 हमने यहाँ पे लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 लिखा, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं, 7 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, प्लस क्रोमियम 2 हैं तो उसको आपने 2x लिख दें या 2Cr लिख दें, दोनों बातें सही हैं। फिर उसके बाद देखिए 2Cr मैथमेटिकल सोल्यूशन है, 7 2 ज़ा 14, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा, तो इट इज़ 14 इज इक्वल टू -2। So mathematically if you do it like this, so it is -2 plus 14, so the final answer is +12, but this +12 and here this is 2x or 2Cr, so definitely Cr will come here, or Cr remains here, but 2 comes on the denominator on the other side, so the oxidation state of chromium is +6. So in this way we have found out the oxidation state of chromium, that is +6 for each chromium in this Cr2O7. Similarly, if you are going to find out the oxidation state of manganese Mn in MnO4, KMnO4, so as this is a neutral compound, it has no charge. So on the right hand of this is sign of the is equal to sign, we will write 0. 4 oxygen are there. So 4 multiplied by -2, as I've already mentioned that oxygen must be in -2 ion when it is there. And there is only one manganese, so it would be written as it is. And on the other side there is one potassium, and potassium has +1 charge, so don't mention to +1 if it is on the left hand side, or if you will write there is no problem. So finally this is 1 plus Mn and -8, 4 to 8, and minus plus minus, it is 0. So +1 and -8, it becomes Mn -7 is equal to 0. So finally Mn is equal to +7 because there was 0. So in this way you have find out the oxidation number of these ions. Determine the oxidation state, the oxidation number of the following: any chromium in H2CrO4, iron in Fe3O4, sulfur in K2SO4, K2S4O6, chlorine in HClO4. So it is somehow similar question as we have discussed previously. So we should start from one, that is Cr in H2CrO4। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है
तो न्यूट्रल में हमें ये बात मालूम है कि जब इजिकल टू का साइन यूज़ करते हैं तो उसके राइट साइड पर जीरो ही लिखेंगे। अच्छा, 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, क्रोमियम एक ही है तो इसको Cr लिख दिया। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी याद रखिएगा कि मेटल्स के साथ अगर होता है तो -1 होता है, अदरवाइज किसी और कंपाउंड में मौजूद है अदर देन मेटल्स, किसी नॉन मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन +1 होता है। तो 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाय +1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय +1। अच्छा, वाज़े लिखना चाहिए ताकि वो आपकी राइटिंग मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, तो अब ये देखिए कि ये आ गया +2 Cr and 4 2 8 यानी -8 is equal to 0. So +2 -8, it becomes -6 is equal to 0. So finally Cr is equal to +6. So the charge of chromium in this chromic acid molecule is +6. Similarly, in this case, there is sulfur in K2 S4O6, S4O6. Again compound, आयन नहीं है, ये कंपाउंड है तो कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता, 0। 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज -2। 4 सल्फर है, 4s या 4x लिख दें आप, एंड 2 पोटेशियम, इसमें इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय +1। तो इट इज +2 + 4s -12 is equal to 0, and here +2 and -12, so it is -10, 0. So 4s is equal to +10 and s is equal to +10 divided by 4. So here answer is +2.5. Yes, it is possible. +2.5 आंसर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बात याद रखिएगा। सो इसका आंसर है +2.5। तो चार्ज ऑन सल्फर इज +2.5। एक सल्फर पे चार्ज आ गया 2.5। अच्छा, अब आ जाइए तीसरा एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल है आपके पास Fe3O4। Fe in Fe3O4, just like rest of the question, it is also neutral, so it is 0, and 4 oxygen atoms, so 4 multiplied by -2 plus 3Fe, so 3Fe plus -8 is equal to 0. So it becomes 3Fe is equal to +8. So Fe is equal to +8 divided by 3. So the answer would be plus 2.66. अगर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 is remaining point, you have added 0, 3 6 are 12, 3 6 are 18, 2 remaining, so there would be recurring digit 2.6666, so it becomes 2.67। इसमें एक आयरन जो है वो 2+ है, यानी एक FeO कंपाउंड है, और दूसरा जो है Fe2O3 है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो है +3, जबकि यहाँ पर जो आयरन है वो है 2+। तो इस वजह से यहाँ पर ये फ्रैक्शन में चार्ज आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे सल्फर है, तो यहाँ पे जो चारों सल्फर है वो 2.5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, लेकिन इनमें से किसी की जो है +4 होगी और किसी की +6 होगी। तो ये ऐसा होता है। तो इसको हम कभी और इन डिटेल देख लेंगे, लेकिन राइट नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड और आयन। तो 3 ये हो गए, और एक और हम कर लेते हैं, क्लोरीन इन ClO4। सो क्लोरीन इन ClO4, 4th नंबर, क्लोरीन इन HClO4। अच्छा, अगेन ये भी न्यूट्रल है,
जब न्यूट्रल है तो इजिकल टू के साइन के साथ आपने 0 लिखना है राइट साइड पर। और 4 ऑक्सीजन, 4 × -2, क्लोरीन एक ही है, उसको मालूम करना है, एज इट इज छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन आपको मालूम है कि नॉन मेटल के साथ होता है तो +1 होता है, तो +1 प्लस क्लोरीन -8 इजिकल टू 0। सो Cl -7 इजिकल टू 0। क्यों? क्योंकि +1 और -8 तो -7 रह गया, और जब इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये बन गया +7। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर कह लें, ये आ गया इसका +7। सो देयर इज +7 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दिस क्लोरीन। तो ये है तरीका कि हम किस तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं उस कंपाउंड में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो यस हो सकता है। और वजह क्या है मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली इस कंपाउंड में सल्फर किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आयरन जो है किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस वजह से इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आती है। बहरहाल आपको तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको तो सिर्फ ये डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो या फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग, तो फिर आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को समझना एक अलग चीज़ है और एग्जाम में क्या करना है वो सीखना एक अलग तरीक़ाकार है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड से इक्वेशन की बैलेंसिंग।